ओके, सो हिपोक्रेटिस से अपन मिले थे और वह बिजी था। यहाँ के जो लोग हैं वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनका इलाज करने में, लेकिन उसे किसी प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत है और वो प्रेस्क्रिप्शन अपन लेने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। कोई फिजिशियन है जो यहाँ पे इस फोर्ट में होने वाला है और उससे हमें वो रिपोर्ट मिलने वाली। लेकिन यहाँ पे ओके, वो बंदा है यहाँ पे जिससे हमें बात करनी है, जो डमेस है। उसके नोट्स चाहिए, उसके नोट्स मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन वहां तक पहुंचना है तो पहले ये जितने भी बंदे यहाँ पे हैं इनसे पार पाके निकलना होगा, इनको पेल के निकलना होगा। ओके, सो सबसे पहले जाएंगे डिसेबल करने जो वहां पे ऊपर चिमनी है उसको, और उसका फर्क यह पड़ेगा कि जो रेनफोर्समेंट है वो नहीं आएगी। जाना है वहां पे। एक बंदा आ रहा है इस तरफ से। I need to find who's doing that. Come on, easy. Okay then. खेला शुरू किया जाए फिर। ओके, इजी। इस तरफ से कोई बंदा आ रहा ना अभी। क्विक। एक बंदा और अपनी तरफ बढ़े आ रहा है। इस वाले बंदे को शक हुआ थोड़ा बहुत। खैर आ इसी तरफ रहा है। That's odd. I should go look. Come on. ओके, तो यह वाला एरिया ऑलमोस्ट क्लियर है।
ओके, फिर इस तरफ अभी कोई आ नहीं रहा है तो अभी के लिए हम अपना काम कर सकते हैं ना। What are you doing here? Hippocrates sent me. Your commander stole his notes, and I think you have them. The ones written by the great Hippocrates himself. I'm sorry. They were burned in the last attack. What? You heard me. The medical tent was burned. At least I memorized the notes before we lost them. I'll transcribe them when I have time, or when the war subsides. Then you'll have to come with me. A patient Hippocrates is treating will die without your help. I have a patient right here who needs my help. Can't someone else take care of this one? I'm the only doctor here. Now let me work. ओके सो यह बंदा ऐसे आने को रेडी नहीं है, थोड़ा सा इसको एनफोर्स कर सकते हैं। There isn't enough time. I need you at Hippocrates' camp now. ओके, अब यह थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि एक बंदे को लेके निकलना इतना आसान नहीं होगा। ओके, घोड़ू यहाँ पे हेल्पफुल होगा, उस पे लाद के ले जाएंगे। ओके रसो, यहाँ पे अपना काम हुआ कंप्लीट। Maybe the punch was a bit hasty, but I couldn't wait forever. Neither could Hippocrates. लेके पहुंचते हैं हिपोक्रेटिस के पास में। ओके ओके ओके, अपन दूसरी तरफ आ गए, वो आगे वाले माउंट पे। I love a good one. ओ कह रहा इजी। How's the patient, Hippocrates? I couldn't remember the proper steps for treatment and you were gone so long. Where am I? What's going on? My friend here, Cassandra, brought you to help me with a patient, Dimas. I went to see the priests first. I had to find out about my mother. A worthy pursuit, though it cost this man his life. The payment we should seek is the preservation of life. A good doctor puts the needs of his patients first. I have learned a lesson today. I will take some time and write down what I remember of your notes, Hippocrates. Hippocrates, I'm sorry the patient died, but I still need to know what happened to my mother. Come with me. We should talk. The importance Okay. of diet to maintaining one's health cannot be overstated. What good can one apple really do? Well, taken daily, they can keep the doctor away. But to more serious matters. I know why you're here. You're looking for your mother. You remember her? I was young then. I didn't know how to help. I turned her away. But her look of determination and despair was burned into my mind. It has never left me, and it never will. After, I swore to Apollo that I wouldn't turn away another patient, that I'd dedicate my life to the cause. She made an impression on me. Your brave mother did. She would be happy to know that. I know something that may help you find her. I swore I would never tell anyone about Dolops and his past, but I owe this to your mother. Who's Dolops? He was a priest who dedicated his life to helping orphans.
It's possible he remembers that night long ago. Maybe he would know something about your mother and her child. I'll go see this man. Thank you, Hippocrates. ओके सो अपनी क्वेस्ट यहाँ पे कंप्लीट। और एक जो चीज हमें वहां पे नहीं मिली थी वो चीज यहाँ पे हमें मिल गई है, और वो यह है कि कोई बंदा है जिसका नाम है डोलोप्स। अगर उसके पास में हम जाए तो कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है और आगे की जो मरीनी है उसके बारे में। सो अभी आगे बढ़ेंगे और चलेंगे उधर, देखते हैं डोलोप्स के पास में क्या इंफॉर्मेशन होगी। वो कह रहा सो हम डोलोप्स से मिलने के लिए इस तरफ आए हैं, और कोई फार्मर है यहाँ पे जिसका नाम है डोलोप्स। उसके पास में शायद मरीनी के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि हो सकता है कि वो उससे मिला हो 17 साल पहले जब वो यहाँ पे आई होगी। That's the man Hippocrates mentioned, but he's hiding. ओके सो हम कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ने वाले हैं। जितनी मेहनत लगेगी, जितना एफर्ट लगेगा, वो पूरा करने को रेडी है। लेकिन किसी भी हालत में हमें बस इंफॉर्मेशन हाथ लग जाए मरीनी के बारे में। इसी सिलसिले में हिपोक्रेटिस से मिले क्लू के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई बंदा है जो छुपा हुआ है, इससे मिलते हैं। Go away! Calm down. Hippocrates sent me. The great doctor is concerned for my health? Yes. And we need some information. Tell him someone tried to kill me. Kill you? He said you worked with orphans. That's why I'm here. That was long ago. Now I'm just a farmer. And I'm Amistios. If I stop this killer, will you speak with me? I will. ओके Why would someone attack you? My neighbor thinks I'm bad luck. He may be right. There's a difference between insulting someone and attacking them. What else? I'm behind on my rent. I think my landlord wants to get rid of me and find a new tenant. I'll find out who wants you dead. It was my neighbor or my landlord who attacked me. But you can't punish someone unless you know they're guilty. I'll be back when I figured it out. Then, we're talking about your past. ओके सो हर एक बंदे की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और वो हम सोल्व करते जाएं तो वो बंदा शायद हमारी हेल्प करने को रेडी हो। ऐसा ही एक सीन इस बंदे के साथ में भी है कि इसको किसी ने मारने की कोशिश करी है। अब हमें उसका पता करना है कि किसने करी है। This black cloth is fine enough for a king. Would do well as a mask too. ओके सो जिस बंदे ने ट्राई किया होगा उसने मास्क पहना होगा। This armor is broken, but it was valuable. If it belonged to the attacker, he's either wealthy or very lucky. तो टूटा हुआ कोई हथियार यहाँ पे है। एक मिनट, इन लोगों से पूछताछ करने से पहले इसका पहिया और यहाँ पे ब्लड से This knife has seen better days. Like something a poor farmer would use. ये सो नाइफ भी मिल गया। बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी इन बंदों से। I'm looking for the person who attacked Dolops. I saw it happen. His face was covered, but I'm sure it was our landlord. He lives all alone and hires soldiers to protect him. He has to be hiding something. Thanks for letting me know. ये सो इस बंदे के अकॉर्डिंग देखा जो लैंडलॉर्ड है उसने अटैक किया। Did you see someone attack Dolops? Yes. It was terrible. Who did it? I couldn't see clearly, but I think it was that bull-headed neighbor of his. He must have finally snapped. Thanks for letting me know. ओके सो
अजीब सी कसमकस है। इसको लग रहा है कि इसके जो नेबर है उसने अटैक किया था। खैर इसी से एक बार बातचीत कर लेते हैं। Mistios! You scared me. I know who did it. What do you think? Who tried to kill me? तो कौन हो सकता है? मतलब वेल्दी हथियार इसके पड़ोसी के पास में तो नहीं होंगे। जो लैंडलॉर्ड है उसके पास में हो सकते हैं। सो शायद लैंडलॉर्ड गिल्टी। It was your landlord. Of course. He wants me out of the way. I'll take care of him. Be careful. He's dangerous. ओके डन। जो लैंडलॉर्ड है उससे मिलना है, उसे कन्फ्रंट करना है। Best stay out of sight. जरूर। तो इसने यहाँ पे सोल्जर्स हायर किए हुए हैं। थोड़ा सा जगह का जायजा लेते हैं। जरूर लैंडलॉर्ड को कन्फ्रंट करेंगे, उससे पहले इन बंदों को पेलना पड़ेगा ना। सो दन दनाते हुए चले या थोड़ा सा संभल के देखते हैं। डन। और तो कोई मुझे दिखाई नहीं दिया है। एक बंदा उस तरफ से आ रहा है, वो इसी तरफ आए उससे पहले इस वाले बंदे को पेल देते हैं। ओके अब एक ये है बंदा और एक आ रहा है उस तरफ से। चलो फिर इतना टाइम नहीं है। सो आसपास के जो गार्ड्स थे वो पेले गए। बारी है इनकी। डन। अब हमें चलना चाहिए अंदर और इस बंदे से बातचीत करनी चाहिए। नॉकआउट करें या असैसिनेट करें। खैर डन। थोड़ी खुले में बातचीत हो जाए। चलो फिर हो गई खुले में बात। ओके बेबी। सो लैंडलॉर्ड को पेल के वापस आ गए इस बंदे के पास में। अब देखते हैं। ही इज ओपन ऑल्सो। Your landlord is dead. He was a lot more than that, though. He was one of those people, wasn't he? I can't. Please, take this. You might find it useful. You wanted to know something. Of course. Socrates said you used to work with orphans. I did, but Chrysis drove me away. So she did. Where did you last see her? In the woods near the sanctuary of Asclepios. But that was many years ago. ओके। सो जो क्रिसिस है मतलब ऑलमोस्ट वो यहाँ पे कंट्रोल कर रही है। और यह जो बंदा है यह ऑर्फन जो होम था उसको चलाता था और इस बंदे को बेदखल वहां से किया है इस क्रिसिस ने। तो यह सब हुआ है उसी के आसपास जब मरीनी यहाँ पे आई होगी। ओके। Where do you think Chrysis is now? I can't be sure. But she used to pray at the altar of Apollo Maleatas. That's where she decided which children to train and which to let die. ओके देन ढूंढते हैं उसको। You have done your duty to Ira. I'll deal with Chrysis. Hush, my child. May Ira bless our sacred family. ओके। सो जो क्रिसिस है वो है जो कल्ट है उसकी एक मेंबर। इसको ढूंढने के लिए यहाँ पे हमें जो आर्गोलिस है उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा।
और फिर पता चलेगा कि यह कहाँ पे है। वो कह रहा सो क्रिसिस को खोजते हुए हम पहुंच गए इस काली अंधेरी रात में, बिल्कुल जंगलों में जहां पे अल्टार है वहां तक। और वो लोकेशन हो सकती है इसी तरफ सामने। तो अब अपने टारगेट के बिल्कुल से पास में हम हैं। बुलाते हैं अपने ईगल को और देखते हैं कि यहाँ का क्या सीन है। क्या क्रिसिस यहाँ पे हमें मिलने वाली है? ओके ओके ओके, यहाँ पे कुछ तो है। There's the altar of Apollo Maleatas. ओके, सो अल्टार ऑफ अपोलो मलयाल्स तो यहाँ पे है। ठीक है देन, Move. चलते हैं ऊपर की तरफ। There's the statue of Apollo and the altar. ओके बेबी, Sis will find a lot more than a helpless infant waiting for her. तो इंटरेक्ट करें और देखें क्या यहाँ पे क्या होता है। लेट्स गो देन। A warning. Must be getting close. कोई बेबी के क्राइंग की आवाज है ना। ओके, आवाज इस तरफ से आ रही है। एक तरीके से जो क्रिसिस है उसने हमें वार्निंग एक तरीके से दे दी है। जो ईगल था जो जहां वहां पे मरा हुआ था अल्टार पे। खैर इस तरफ से जो बेबी की क्राइंग वॉइसेस है वो आ रही है। और ये तो कोई ओ त्री, आजा। ये तो कल्ट वाले बंदे हैं ना। लेट्स गो देन बेबी, आजा। इजी, डन। और है कोई यहाँ पे भी? एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। लेट्स गो देन। Killing seems to run in your bloodline, almighty eagle bearer. Of course. Dare speak of my family, Snake. I still remember the night your mother brought me my child. The sad, pathetic thing, crying in the rain. Had I known then that Mirini had 2 children. But here you are. My family is complete. What do you know of family? You take children from their mothers and silence anyone who gets in your way. Silence? Midon chose to slice off his own cursed tongue. I'm talking about Dollops, the one your cultist puppets tried to kill. I should have killed that idiot son of mine years ago. Your own son? Dollops turned his back on me the night I rescued your brother. He was too stupid to see the child's destiny was intertwined with my own. You let my mother believe her baby was dead. But he was. Oh, how she wept when his little heart stopped beating. But then I took care of him. Placed him on this very altar. Screamed for the gods to spare his life. And they listened. ओके, सो यहाँ से वो सारा कुछ है वो शुरू हुआ था। मतलब इसने उस बच्चे को रख दिया जो एलेक्सियोस है उसको अपने पास में, और इसकी मदर है मरीनी उसको विश्वास दिला दिया कि वो बच्चा है वो खत्म हो गया है। और अभी जिस फार्मर से अपन मिलके आ रहे हैं वो इसका खुद का बेटा है। ठीक है, सो थोड़ी बहुत पास्ट की जानकारी ले ली जाए पहले इससे। What did you do with my brother? I saved his life.
By teaching him to suffer. To know pain so well that he would learn to welcome it like an old friend. And now he will teach all of the Greek world to know that pain. You tortured him? He was just a baby! I taught him to survive. This world is cruel. It demands strength or death. So I gave him strength. ओके सो इसको लगता है कि इसने उसको ट्रेन किया है, बट कितना पेन दिया होगा वो देखेंगे। मदर कहाँ है इसकी? Where did my mother go that night? That weakling crawled to the hills of Corinth. The monger was supposed to deliver her back to me, but she can't hide forever. She will give us more children. ओके सो वो गई थी कोरिंथ में, और जो मोंगर वहां पे है उसको उसकी मदर के पीछे इसने लगाया था, और आज भी ये उम्मीद में बैठी है कि वो जो मोंगर है वो उसका हेड लेके आएगा इसके पास में। सो इट्स टाइम नाउ बेबी। I'll run my spear through your throat for the pain you've caused. This world is pain. I gave thee more strength to cope. Your mother was a weakling who whined to the gods like a pig on an altar. I am more a mother to her child than she will ever be. I can be a mother to you too, Eagle Bearer. This goes beyond my family. You and your cult are going to destroy the Greek world. You bring nothing but suffering. You talk of suffering, and yet you come drenched in blood and threaten my life. You are a killer, just like your brother. Here, let me show you. Oh boy. My child! This baby is yours? He was dying. Chrysis had me bring a gift to Ira so that he might be protected. Chrysis lit the temple on fire with the boy and me inside. Chrysis is a servant of Ira. She does what needs to be done. What needs to be done? She left your baby to burn alive. And you saved him. God's bless you, Eagle Bearer. Sleep now, sweet child. Mater is here. Not sure saving that baby was the right thing to do. ओके सो जो क्रिसिस है उसने मतलब यहाँ के लोगों को भी ये Mirini believes my brother died long ago. बिलीव दिला रखा है। I should head back to Athens to see Aspasia. I can't let Chrysis walk free. I'll kill that Malaka. तो मतलब जो बंदी है इसने सबको, जो क्रिसिस है इसने विश्वास दिला रखा है यहाँ पे कि वह जो भी करती है भगवान की मर्जी का करती है, और यही इन सब के लिए अच्छा है। फिर इसको से खाली खुले में घूमने नहीं दे सकते हैं, तो इसको भी फाइंड आउट करेंगे एंड देन पेलेंगे। खैर अभी के लिए वो भाग गई है यहाँ से। वो कह रहा सो अभी के लिए हमें वापस चलना पड़ेगा एथेंस, और वहां पे एस्पासिया है जो शायद हमारी कुछ हेल्प कर सके। कुछ जो क्लूज हैं उनसे एस्पासिया शायद कुछ हमारे लिए ढूंढ निकाले। तो अभी हम वापस से मूव करने वाले हैं एथेंस की तरफ, और वहां पे मिलते हैं एस्पासिया से, देखते हैं क्या हेल्प वो हमारी करती है। वो कह रहा सो वापस से हम आ गए हैं एथेंस में, बट यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है, एंड यहाँ पे जो प्लेग है वो फैल चुका है और लोग मर रहे हैं यहाँ पे। खैर इसी के बीच में हमें आगे बढ़ना होगा, और जो एस्पासिया है उससे बातचीत करनी होगी, वह शायद हमारी कुछ हेल्प करे। Cassandra, you're back. Gotta run, sorry. Wait! Where? I'll be right back. See you at Aspasias. Sometimes I think you are too much like me. ओके सो एस्पासिया से बातचीत करनी है, उसके लिए जाना होगा इस तरफ। तो यह बंदा है जो यहाँ पे माहौल बना रहा है, जो इनका लीडर है उसके अगेंस्ट। खैर बढ़ते हैं आगे, एंट्रेंस लेते हैं, एयर रूट लेते हैं, एंड देन वी गो। और यहाँ पे है एस्पासिया जिससे हमें बातचीत करनी। Aspasia,
Oh, Cassandra, you returned to Athens. What's left of Athens? The world we've built is crumbling at our feet. It's bleak, but it hasn't killed you. You're right. But everything Pericles has built is being destroyed. It's chaos outside these walls. People have forgotten how to be people. I came to talk to you. I found out some things about my mother. Her name, her shape. Cassandra, it's not the time. Pericles is dying. He won't see me. He won't let Hippocrates in his room. He only babbles about going to his precious Parthenon. Okay. Pericles is a strong man. I'm sure he can fight the sickness. You heard the mob. He can't defend himself. He'll die with no glory. Athens has known him a lot longer than they've known this plague. He gave them a voice. His accomplishments will speak for him. Pericles needs treatment, and the gods know he won't let me in. He respects you. Could you go to him? I could try. If you do, I will make the time to talk about your mother. For now, he needs your help. It's worth a shot. वो कह रहा सो जो पेरिक्लिस है वो भी इस प्लेग की चपेट से बचा नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं और बातचीत करके देखते हैं पेरिक्लिस से अगर वो मेडिसिन लेने को रेडी हो, क्योंकि एस्पासिया से वो मिलना नहीं चाहता है, किसी से नहीं मिलना चाहता है, ना हिपोक्रेटिस से मिलना चाहता है। अगर यह काम हमने कर दिखाया तो फिर जो एस्पासिया है वो मरीनी के बारे में बातचीत करने को रेडी है। It's Cassandra. Yes. Come in. It's embarrassing. Someone so strong seeing me like this. You look healthy as ever. Tell Aspasia that. She won't worry so much about me. I brought your drugs. Ah, yes. It's usually Phoebe who does the delivering. At least I'm alive. Though I can't say the same for my city. It's a shadow of what it was. Well, it will belong to Cleon now. He will have to lift it out of its sorry state. I wish to see it with my own eyes. Come to the balcony. Much has changed. I can't even stand up straight to look death in the eye. You'll recover sooner if you let Hippocrates see you. ओके, सो जो क्लियोन है वो यहाँ पे शायद तख्ता पलट में लगा हुआ है, सत्ता पलट में, जिसको यह देखना चाहता है अपनी आंखों से। Its people, Aspasia. No, you haven't. You're kind, but I've lost. Aspasia needs protection, as does Athens. I thought I gave enough to Athena, but it seems it isn't so. I should be out there, on the streets. You'd be overtaken. There are mobs, and Cleon's doing nothing to calm them. Thank the gods, Cleon won't see me like this. But that's all I can thank the gods for. They've turned on me. It's not the gods' fault. It's the world. It's turned upside down. Athens' fate is decreed. All we can do now is wait. You should go back inside. You need to rest. Where I should be is in the Parthenon, my greatest legacy to Athens. We need the gods' blessing. But Aspasia... Aspasia's right. She often is. But not about this. Yes. I'll go inside. Thank you, Cassandra. Tell my Aspasia I was a good boy and took my drugs. I will. ओके, सो वापस से चलना है, बातचीत करनी है एस्पासिया से। इसने बोल दिया है कि इसने ड्रग्स ले लिए, तो ये चल के बोल देना ऐसा कुछ। खैर, तख्ता पलट की तैयारी यहाँ पे चल रही है, प्लेग फैला हुआ है, एस्पासिया की टेंशन है पेरिक्लिस को। Pericles let me in.
He took his drugs without complaint. Thank you. Something wrong? I expected Phoebe back by now. I saw her in the crowds outside. Did you send her somewhere? I had her go to Anastasios to see about the ferry. As soon as Pericles is strong enough, we're leaving Athens. We have to. But now she's missing. I'm sure she's all right. Aspasia, there's a plague. You've seen the streets. She's just a child. Give her the credit she deserves. She's more of a fighter than I was at her age. I told Pericles the cult is in Athens. It's too dangerous. The cult? I thought it was the sickness talking. I'm going to look for her. Where is Anastasios' house? It's across from the Odeon of Pericles. Here. ओके सो अपनी क्वेस्ट तो हो गई है कंप्लीट, बट फीबी जो यहाँ से गई थी वो किसी घर में शायद चली गई हो और वहां पे उसको खतरा है। एक तरफ प्लेग फैला हुआ है, दूसरी तरफ कल्ट है। सो यहाँ पे जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा डेंजर होती जा रही है। अभी के लिए बढ़ना है हमें इसी तरफ आगे। तो यहाँ के स्ट्रीट्स हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। हर तरफ ब्लड फैला हुआ है। वो कह रहा सो एथेंस की इन गलियों से होते हुए हम पहुंच गए ऑलमोस्ट उस घर के आसपास में जहां पे फीबी सस्पेक्टेड है। इसी तरफ कहीं ना। This looks like the place. ओके, बढ़ते हैं आगे। देखते हैं कि सारा कुछ हो राइट है या कोई दिक्कत है यहाँ पे। यह जो बंदे खत्म हो गए प्लेग से, उनसे भरी हुई गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। By the gods! Oh boy. What happened here? यहाँ पे तो पूरा एक मसाकर सा हुआ है। I'm glad Phoebe wasn't here. Hopefully she's safe. जैसे किसी ने किसी को मारा हो। This was savage. Done to send a message. एक लियोन की तरफ से है या कल्ट की तरफ से, आई डोंट नो। Deimos must be carrying through on his threat. घर से बाहर निकलना है अभी के लिए। वो किसो कल्ट के गार्ड हैं, उनसे Phoebe! No! फीबी को रेस्क्यू करना है। Stop! Phoebe! कम ऑन मैन। Just wait, baby. Come on. Come along. आ जाओ। Let's be there. Phoebe! No, 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 no. Ella. Earth, ये भी खत्म हो गई। mother of all, I greet you. Oh my God. यह तो वो है ना जो गिफ्ट इसने दिया था जब कसांद्रा कहानी के शुरू में निकली थी। Anyazu.
Cassandra! Are you all right? I need to speak to Aspasia. We must find Pericles first. He's missing. I don't fucking care! Tell me where Aspasia is! Cassandra! I'm sorry, Phoebe. Aspasia went to find Pericles at the Parthenon. She should be there. I think we'd better go with her. I agree, my friend. I agree. वो कह रहा सो यह बहुत ही एक अजीब सा घटनाक्रम यहाँ पे हुआ है जो फीबी हाउस को कल्ट ने खत्म कर दिया है और जो हिपोक्रेटिस और सोक्रेटिस हमारे पास में आए थे वो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि जो पेरिक्लिस है वो भी मिसिंग है और एस्पासिया गई है उसको खोजने तो कुछ अनहोनी एस्पासिया के साथ में भी हो सकती है इसीलिए अभी हम एस्पासिया से बात करने के लिए जो टेंपल ऑफ एथेना है उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं फिर फीबी को ये लोग क्यों मारेंगे पूरा मतलब कल्ट के वहां पे गार्ड्स हैं वो थे तो ऑब्वियसली इट वाज कल्ट एस्पासिया तो यहीं पे There you are, Cassandra. Quickly, Pericles may be inside. What's gotten into you? Phoebe is dead. She's dead because you sent her to do your work. No, it's not true. Phoebe wanted to go. She told me she would be all right. And you believe that child? You know Phoebe. She wouldn't have taken no for an answer. It was out of my hands. Out of your hands? You sent her away! You could have protected her! What I asked of her was needed to protect Pericles. She lived to help others, Cassandra. She lived to help you. It's a tragedy. She should be here. Of course she should. But you know the cost of living this life. I do. But did Phoebe? Aspasia, you're here. Any sign of Pericles? If he's here, he's inside praying. He refused to stay safe in the villa. Things have gotten even worse in the Agora. It's madness. Speak later and act now. Pericles? Go! I'm going to destroy everything you ever created. Oh boy. Demos is here. Uh-oh. Pericles! Come on, man. Stay out of my way. Really? चलो फिर सो डेमोस यहाँ पे था कम ऑन और पेरिक्लिस को भी इन लोगों ने खत्म कर दिया Come on, boy. All is lost now. He was a great man. Perhaps greater than we even knew. We need to get her out of Athens. We'll take my ship. We have to leave. Don't let him die in vain. Never.
We have to move quickly. Stay close, just in case. वो कह रहा सो पेरिक्लिस खत्म हो गया, फिर भी खत्म हो गई है, और अब इन लोगों ने डिसाइड किया है कि यह सब यहाँ से निकल जाएंगे एथेंस से, और कसांद्रा की जो बोट है उससे जाएंगे। Cleon has ordered that no one leave Athens. Really? And he wants Aspasia brought to him. I'm Okay. not going. Leave! Don't let them go. I'm going to break you! Okay then. Come on boy, आ जाओ। Come on. चलो फिर। Come on, baby. By the gods, you will pay for this! It's all clear now. Let's go. We're going to stay, Cassandra. What? Why? My work is here. I can't leave the Athenians in the state they're in. You don't need us to protect Aspasia. Leave Athens to us. ओके सो ये लोग यहाँ पे रुकना चाहते हैं, दोनों हिपोक्रेटिस और सोक्रेटिस, और यह बोल रहे हैं कि एस्पासिया को आप लोग ले जाओ और हम लोग यहीं पे रहेंगे एथेंस में। खैर एथेंस तो खत्म हो चुका है पूरा। The city has been taken. This isn't the Athens you used to know. That is why I must stay. We must begin again. You're sure? I have lived as an Athenian, and I will die as an Athenian. Then do something for me. Both of you. Of course. Retrieve Phoebe's body. Give her a proper burial. Everything she deserves, and more. Thank you. Time to go, Cassandra. And I expect to see you both again. Alive. The farther we get from Athens, the quieter it grows. As though it's peaceful. But I know better. I'm sorry, Aspasia. About Pericles. And Athens. You have no need to apologize. For anything. It feels like I let everyone down. I didn't get to them quick enough. Didn't make the right decisions. It's not your fault. There's no one to blame but the cult of Cosmos. About Phoebe. No, allow me. Phoebe was my responsibility. I should have kept her closer to me. It was a mistake. No, I wanted to apologize. It wasn't your fault. I'm sorry. Yet another murder to the cult's credit. I'll make each of them beg for mercy before I kill them. That time will come. For now, let us look to the future. Do you have a heading? I was hoping you would help me with that. Yes, of course. This woman. Phoenicas. Her ship was called Siren Song. Phoenicas. Yes, I know the name. Last anyone heard, her ship was docked on the island of Naxos. Then we go to Naxos to see Phoenicas. Welcome back! You see that volcano? It's pretty hard to miss. Some say there is an entrance to the underworld at the bottom. And what? You enter by diving in it? That's the spirit! A brave Arcadian I once knew had the same idea. वो कह रहा सो The heat of the अभी flames हम निकल पड़े हैं आगे की तरफ, जो इसकी मदर हम मरीनी उसकी खोज में जो आइलैंड ऑफ नेक्सोस है वहाँ पे शायद कोई प्रोबेबल लोकेशन है जहाँ पे वो हमें मिल सके। तो एस्पासिया अपने साथ में होने वाली है अपनी जर्नी में।
और हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं नेक्सोस। तो अपने इस आज के एपिसोड को इतना ही रखेंगे और नेक्सोस आइलैंड अपन पहुंचने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो कम ऑन देन, लेट्स हेड टू नेक्सोस बेबी।